Augmentation of agricultural productivity using low-cost technology with local communities चेक in करिए Mewat आ रहा होगा, district लाइव of आ रहा होगा. Rajasthan promise to allow students first-hand research experience. Rounds of My crores due of से चला है, rupees ये have से तो been नहीं चल distributed रहा. for these projects. Faculty development programs are organized in college on various topics like emotional intelligence, ICT, and learning management systems, writing research proposals, and ICT tools for non-teaching staff. हमारा बनाया हुआ नहीं ना. कोई बात नहीं है, चलें तो जो लगा रखा है हमने ना. जब पोस्ट करेंगे ना तब चेंज कर देना. Our placement cell अब has साउंड चेक कर लो organized इसका. internship and recruitment fairs where माइक का companies साउंड like चेक कर. IBM, नहीं, इसमें नहीं आ रहा अभी. आ रहा है ऊपर से पूछना, साउंड आ रहा है ऊपर. KPMG, Aon, Cardforce, अंकुश, सर इसका साउंड जा रहा है. schools have absorbed इसका साउंड जा रहा है. students from our college. इसका जा Over the रहा है. last मैम उसमें 5 लगाओ ना, years, कैप्चर कार्ड we लगाया have आपने. had वो more than माइक का लगाया आपने. 270 कैप्चर कार्ड लगाओ ना. In the last year itself, we have sent 163 students Hello? for internship. हाँ बस थोड़ा साउंड बंद कर दे. नहीं है तुम्हारे पास ये रखो वायर. सब वायर दे. Our sports facilities cater to a range of games. The college has an वहाँ से भी expansive चेंज करना पड़ेगा ना that सेटिंग से. includes 2 यहाँ पे central कैमरे पे cricket जाइए. turf pitches, 3 practice pitches, माइक. a volleyball court, a football यहाँ से ground, चेंज कर दीजिए. as well as courts for सर पहले बंद kho, करो. kabaddi, and निकल तो नहीं जाएगा बीच में. चलो निकल के मेरे ऊपर आ गया. ऐसे निकलना तो नहीं चाहिए. ये ना देखो लूज हो रहा है, ऐसे ऐसे करके निकलेगा. इधर ना. A very warm good morning to everybody present here. So how's everybody doing today? Excited? Well, I can't hear you. Excited? Or a little nervous? Or maybe a little bit mix of both? Well, I get it. We all have been exactly where you are today. Before we begin, let me introduce myself. My name is Anushka Jha, and I'm currently a 4th year student pursuing English Honours at Ramlal Anand College. I'm also a proud member of Andaz, the anchoring society of our college. Standing here today feels a little nostalgic because not very long ago, I was sitting exactly where you are today. Excited, confused, and wondering how my college life would look like. And trust me, it is one of the most beautiful experiences. A very warm welcome. Yes. A very warm and respectful good morning to our esteemed principal, Professor Rakesh Kumar Gupta, respected faculty members, dear parents, and of course our enthusiastic first-year students. On behalf of the entire Ramlal Anand College family, I extend a heartfelt welcome to all of you today for being with us in the orientation program for the session 2026-27. Today marks the beginning of a new journey filled with learning, growth, and endless opportunities. Asto ma sadgamaya, tamso ma jyotirgamaya, nityor ma amritam gamaya. Lead us from untruth to truth, from darkness to light, and from mortality to immortality. With these sacred words, we now commence today's orientation program with the ceremonial lighting of the lamp, symbolizing knowledge, wisdom, and enlightenment. May I now request our respected principal, Professor Rakesh Kumar Gupta, Mr. Manoj Kumar, convener, admission committee, to kindly come forward for the lamp lighting ceremony. I also request students from the first year to kindly join our respected dignitaries for the lamp lighting ceremony.
Thank you so much, everybody. May I now request everyone to kindly stand for the national song?
Thank you, everybody. I request everyone to remain seated. To formally welcome our students and parents, I have the privilege of inviting Mr. Manoj Kumar, convener, admission committee, to address the gathering. Sir. थैंक यू वेरी मच अनुष्का। आदरणीय प्रिंसिपल साहब, मुक्ता मैम, राकेश सर, बाकी मेरे सारे कलीग्स और सारे प्यारे स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स, आप सबका मैं रामानंदन कॉलेज के प्रांगण में स्वागत करता हूं। आज का दिन बहुत स्पेशल है आपके लिए भी और हमारे लिए भी। रामलाल आनंद कॉलेज के प्रांगण में आपका स्वागत करता हूं। आज का दिन आपके लिए भी विशेष है, हमारे लिए भी विशेष है। हमारे लिए तो साल में हर बार एक दिन आता है जब नए स्टूडेंट आते हैं, हम उनका वेलकम करते हैं और उसके बाद में इस रामलाल आनंद कॉलेज के ही हमारी फैमिली का पार्ट बन जाते हैं। वैसे ही आपका हम वेलकम करने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं। और आज का प्रोग्राम का जो मेन मोटिव है वो ये है कि कॉलेज की जितने कोर्सेज हैं, आपके कोर्सेज के बारे में जानकारी देना और को करिकुलर एक्टिविटीज, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी लैब्स और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेज का है उसके बारे में आपको उसके बारे में अवगत कराना। एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि अभी तक आप स्कूल में थे, बहुत सारी बाउंडेशन आपके ऊपर थी, आप कॉलेज में आप आए हो तो बहुत सारी बाउंडेशन से आप फ्री हुए हो, लेकिन उसके साथ साथ में आप पे बहुत सारी जिम्मेदारियां भी आती हैं। तो उन जिम्मेदारियों, दायित्वों के साथ साथ में अपने का सर्वांगीण विकास करने के लिए विश्वविद्यालय होते हैं, कॉलेजेज होते हैं, जहां पे आप फ्रीली सोच सकें, फ्रीली समझ सकें, फ्रीली बोल सकें और अपने आइडियाज को नर्चर कर सकें, सोसाइटी के लिए नए चीजें डेवलप कर सकें। ये तमाम चीजों के लिए विश्वविद्यालय या कॉलेजेस जो हैं वो आपके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं। और आपको तमाम हमारे यहाँ पे लाइब्रेरी फैसिलिटीज, प्लेग्राउंड, आपके विभिन्न कल्चरल और जो एक्टिविटीज, डिफरेंट सोसाइटीज, उसमें आपको काम करने का मौका मिलेगा। और उनकी जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर उनका आप मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको भरपूर यूज करें और अपने टैलेंट को आपकी एजुकेशन के साथ साथ में बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं उसमें भी नर्चर करें। और इसके साथ साथ मैं आपको 3 बातें कहना चाहूंगा। पहला है डिसिप्लिन। हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि डिसिप्लिन जो कॉलेज का है या किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी इंस्टीट्यूशन का है वो प्राइम मोटिव होना चाहिए। वो डिसिप्लिन तभी बन सकता है जब आप और हम सब मिलके उसमें उसके लिए काम करें। दूसरा आपके लिए है कि आप में जिज्ञासा होनी चाहिए। आप क्लासेज में जा रहे हैं, टीचर से आप इंटरेक्ट हो रहे हैं, तो जितनी जितनी ज्यादा क्वेरीज आपकी हैं उन क्वेरीज को एड्रेस करने की कोशिश कीजिए। टीचर से क्वेश्चन जिस भी एरिया है आप क्वेश्चन पूछेंगे, नया सीखने को आपको मिलेगा और क्वेरीज आपके अंदर नहीं रहेंगी। तीसरी बात है सहयोग या जो आपसी कोऑपरेशन है कि आपस में आप स्टूडेंट के बीच में कोऑपरेशन करें, आपस में एक दूसरे से मिलके रहें, टीचर्स के साथ में कोऑपरेशन करें, इंस्टीट्यूशन के साथ में कोऑपरेशन करें, डिफरेंट सोसाइटीज के साथ में कोऑपरेशन करके अपने आप अपना ओवरऑल डेवलपमेंट आप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में आप जो टीचर्स हैं जो भी क्वेरीज आप निसंकोच पूछ सकते हैं। टीचर्स, हम सारे टीचर्स, प्रिंसिपल सर, सारा हमारा स्टाफ, पूरा कॉलेज का टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ सारा जो है वो आपके एनी टाइम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार रहेगा। थैंक यू वेरी मच। उसके बाद में प्रिंसिपल सर को Thank you so much, sir, for your warm and encouraging words.
It is now my honor to invite our respected principal, Professor Rakesh Kumar Gupta, to welcome the new batch. Sir. सभी को सप्रेम नमस्ते. Good morning, everyone. It is my pleasure to welcome all my dear students, proud parents, staff, my faculty to this 63rd orientation program of Ramlal Anand College, where we are welcoming our young first-year students to the academic session 26-27. आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन रामलाल आनंद महाविद्यालय में. Briefly, I will talk about college, its accomplishments, its achievements, which has been compiled together or which has been achieved with a focus, with a dedication of all my students in past years and my esteemed faculty. This college, Ramlal Anand College, is a 100% University of Delhi maintained college, receiving its 100% grants from Ministry of Education. Though it appears to be a trust college, but not like that. It caters to 3,000 students in undergraduate, offering 14 different programs: humanities, sciences, commerce, management, languages. And also, it's a proud moment for me to share that our faculty has 45 students of PhD to supervise, which is a very high number. And it instills faith in research to do new things, to think out of the box. So you have large opportunities in research and in new thinking process. The college, there are various accreditation agencies जो colleges को ranking देती हैं. एक है NAC, आपने सुना होगा. सभी बच्चे आजकल तो पहले से ही पढ़कर, रिव्यूज पढ़कर, कॉलेजेस के बारे में, विश्वविद्यालय के बारे में पढ़कर अपना बहुत ही एक सोचे समझकर निर्णय लेते हैं कहाँ किस कॉलेज में और क्या कोर्स करना है. तो NAC accreditation लास्ट ईयर हुआ और कॉलेज रिसीव्ड A+ ग्रेड, जो पूरे भारतवर्ष के 3% कॉलेजों में से आता है. उसमें से रामलाल आनंद महाविद्यालय एक है. पिछली बार NIRF, एक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी है, उसने हम लोगों को कॉलेज को 90th रैंक पर रैंक प्रदान किया है, ऑल ओवर इंडिया, ऑल इंडिया रैंक. यहाँ के सभी करिकुलम, यूजी, पीजी और सर्टिफिकेट कोर्सेज, कुछ पार्ट टाइम सर्टिफिकेट कोर्सेज भी कॉलेज चलाता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के साथ मिलकर. सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा कोर्सेज इन फॉरेन लैंग्वेजेस, चाइनीज, जापानीज और कोरियन. ये सारे करिकुलम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO द्वारा सर्टिफाइड हैं, जिससे आप अगर अपनी एजुकेशन बाहर अपना पढ़ना चाहें 3 साल के बाद या 4 साल के बाद, तो ये उन सभी विद्यार्थियों को हेल्प करती है कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने ये सारे करिकुलम सर्टिफाई किए हुए हैं. जो 4 साल से किसी भी महाविद्यालय में एडमिशन जो छात्र छात्राएं ले रही हैं,
उन सबको एक UGCF 22 यूनिवर्सिटी ने नाम दिया है एक करिकुलम का, और यह करिकुलम डिजाइंड है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2020 में शुरू की, और इसी पर आधारित एक UGCF 2020 यूनिवर्सिटी ने डिजाइन किया, उन्हीं बिंदुओं को, उन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं को समाहित करते हुए, ऐड करते हुए करिकुलम में। जैसे आपको वैल्यूज प्रोवाइड करना, बहुत हम भूल जाते हैं काफ़ी, ये हमारे वैसे तो भारतीय संस्कार का एक ये महत्वपूर्ण हमारा ब्रिंगिंग अप जन्म से दिए जाते हैं। वैल्यूज हमें संस्कारों से मिलती हैं। सभी जितने भी विद्यार्थी अपने स्कूलों में जाते हैं, वही गुरु शिष्य की परंपरा को निर्धारित और उसी को देखते हुए आप सारे वैल्यूज को अपने आप सीखते हैं। उसके बावजूद भी इस करिकुलम में उन्हीं वैल्यूज को आगे बढ़ाने के लिए और उन्हीं को रीइंफोर्स करने के लिए कुछ पेपर्स रखे गए हैं। ऐसे ही कुछ स्किल एनहेंसमेंट के कुछ कोर्सेज इसमें दिए हुए हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को देखते हुए आपको ये अलाउड है कि आप अपना मेजर करते हुए उसके साथ साथ अपनी एक माइनर डिग्री भी बनाएं किसी भी कोर्स में, जिनको हम जेनरिक इलेक्टिव कहते हैं। तो इस तरीके से आपको महाविद्यालय करीब फर्स्ट ईयर में ही करीब 14 चॉइसेस देगा, जीई में, सैक में जिसको हम स्किल एनहेंसमेंट कोर्स करते हैं, और ऐसे ही वैक जिसको हम वैल्यू एडेड कोर्स करते हैं। वह मल्टीपल चॉइसेस, आप अपने के मुताबिक जो आपको अच्छा लगे आप उसी कोर्स में उसी को आगे परस्यू कर सकते हैं और उसी में अपनी एबिलिटीज बना सकते हैं, अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, जिसे हम होलिस्टिक डेवलपमेंट कहते हैं। इस करिकुलम के साथ साथ कुछ यूनिकनेस है रामलाल आनंद महाविद्यालय की, जो शायद ही आप किसी और कॉलेज में इसे देख पाए। यहाँ के सभी क्लासरूम्स, सभी लेबोरेटरीज, देर ऑल एयर कंडीशनड। शायद आपने स्कूल में भी ये चीज ना देखी होगी। एंड दिस इज द ओनली कॉलेज इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली where all the classrooms are air conditioned. There are some which are partially, but it is fully air conditioned. इसके साथ साथ इस फुल्ली स्मार्ट क्लासरूम्स, आप सभी क्लासरूम में जाएंगे, वहाँ ICT इनेबल्ड स्मार्ट बोर्ड्स मिलेंगे, और फैकल्टी आपको उन्हीं बोर्ड्स के साथ पढ़ाते हुए इंटरेक्टिव सेशन रखते हुए एक टोटली ट्रांसफॉर्म्ड पेडागोजी को फॉलो करते हुए यू विल रिसीव योर लेक्चर्स। वेरी वेल एनरिच्ड लाइब्रेरी, 70,000 से ज़्यादा बुक हैं। वैसे तो आज के दिन में इसका मायना बहुत कम हो गया है, बहुत कम स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में जाकर पढ़ना पसंद करते हैं, फ़ोन पर ज़्यादा डिपेंडेंसी है। बट मैं चाहूँगा अगर जीवन में आगे बढ़ना है, किताबों का साथ ना छोड़िए, लाइब्रेरी का साथ ना छोड़िए। अगर इसके साथ आप बंधे रहे, एक किताब ऐसी पढ़िए अपने कोर्स की, 2, 3, 4 किताबें अपने कोर्स की जरूर पढ़ें, जब भी आपको उस कोर्स की सही अंडरस्टैंडिंग, सही मायने मालूम होगी। पूरा कॉलेज इको फ्रेंडली है। हमारी टोटल डिपेंडेंसी, अगर हम थे ग्राउंड वाटर पर, वी हार्वेस्ट रेन वाटर थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स। मुझे पीछे एक क्वेश्चन आया मेरे पास कि आपने एयर कंडीशन तो कर दिया और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि आपका कॉलेज इको फ्रेंडली है। इसके लिए हमने प्रावधान, प्रोविजन बनाया हुआ है 130 किलोवाट के सोलर पैनल्स, रूफटॉप सोलर पैनल्स, जो 50% इलेक्ट्रिसिटी का लोड हमारी अपने यहाँ से जनरेट होकर उसको हम पूरा करते हैं। इसलिए हम लोग इको फ्रेंडली हैं। इसी के साथ आप पाएंगे कॉलेज में 130 हमारे बहुत ही काबिल, अपने अपने फील्ड में महारत पाए हुए फैकल्टी मेंबर्स। अवर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन एकेडमिक्स। कुछ कोर्सेज में तो आप हमेशा देखेंगे कि ऑलमोस्ट एवरी अल्टरनेट ईयर वी हैव टॉपर्स, यूनिवर्सिटी टॉपर्स।
excellent performance in cultural activities and sports. अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं, आप ही स्टूडेंट्स ने सबने मिलकर 165 अवार्ड्स आप ही लोग कॉलेज के लिए लॉरेल्स आप लोग लेके आए थे डिफरेंट सोसाइटीज में, और 36 स्पोर्ट्स अवार्ड्स जो नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर हमारे स्टूडेंट्स ने जो गेम्स में पार्टिसिपेट किया, वी रिसीव दोज अवार्ड्स. प्लेसमेंट्स लास्ट ईयर करीब 900 स्टूडेंट्स हमारे पास थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में थे. आउट ऑफ दैट 300 showed their interest to appear for placements, and out of that 174 students secured internships and which were promised to be converted into PPOs. And the offers, the average, if you look at, it was around 5 to 6 lakhs rupees per annum of the average package. We have a incubation hub, incubation center. We also called it as an ideation center, incubation center. और पिछले 5 वर्षों में अगर आप देखेंगे, कॉलेज 6 ऐसे स्टार्टअप्स को इनक्यूबेट किया. एक स्टार्टअप का तो टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है. 3 स्टार्टअप्स जो यहाँ इनक्यूबेट हुए, उनको इनक्यूबेशन का समय और इनक्यूबेशन का उनको मौका, उनको चांस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के इनक्यूबेशन सेंटर में मिला. एक स्टार्टअप की फंडिंग शार्क टैंक से हुई, एक उसमें, और एक की काफी वाज सिलेक्टेड फॉर आइडिया बाज. तो इस तरह के स्टार्टअप, इस तरह की नर्चरिंग, जो बच्चा किसी का भी अगर कोई आइडिया 12th में, 11th में, 10th में कभी जीवन में सोचा हो अपने स्कूल टाइम में कि हाँ इसको हम कभी पूरा कर सकते हैं या इसको एक स्टार्टअप के रूप में डेवलप कर सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम. अभी इसी सेमेस्टर में कुछ कॉलेज ही आपके अपने सीनियर्स टीचर्स के साथ मिलकर कुछ इसी तरह का आइडिया हैकाथन कराते हैं, स्टार्टअप्स का एक कंपटीशन कराते हैं विद इन द कॉलेज. पार्टिसिपेट करें. कॉलेज विल फंड. कॉलेज हैज 10 lakhs rupees specified, right, for this particular purpose to support all new startups in the college developed by our students. We have a number of skill employment और ability courses. इसी तरह के सेंटर्स बनाए हुए हैं. बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको धीरे धीरे करके मेरे साथी सब लोग आपको बताएंगे. मैं थोड़ा ब्रीफ में आपको बताता हूँ. हमारा एक और इम्पॉर्टेंट यूएसपी है महाविद्यालय का, वो है कम्युनिटी रेडियो. कम्युनिटी रेडियो, सामुदायिक रेडियो पूरी यूनिवर्सिटी में किसी कॉलेज के पास नहीं है. ये काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस जर्नलिज्म का कोर्स चलाते हैं, हिंदी पत्रकारिता का कोर्स चलाते हैं. हमारे यहाँ पर ये सुविधा सिर्फ हिंदी पत्रकारिता को ही नहीं बल्कि उन सभी विद्यार्थियों को है जो इसमें अपना कैरियर बनाना चाहते हैं. और बहुत सारे विद्यार्थियों ने अपना कैरियर रेडियो में, कैरियर जनसंचार में या जर्नलिज्म में बनाया भी है. कॉलेज प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू स्टूडेंट्स, चाहे वो बुक बैंक हो, स्टूडेंट एड हो, स्कॉलरशिप्स हो. लास्ट ईयर 15 lakhs rupees was disbursed for the purpose of helping students, those who are not able to pay their fees in time. There are some points that I thought I will share with you. Students और खास तौर पर मैं parents को I would like to say, and I would like to guarantee that myself as principal of the institution and my esteemed colleagues, you will find always with you, hand holding always with you, and all in your ups and downs, you will find standing with you. You can walk anytime in my room. It is an open door policy. Any problem if you have, I hope you do not have, but if there is any, you can directly enter into my room any point of time of the day.
We have faculty mentors. Every one of you will be allotted a mentor, a teacher mentor, for your personal guidance, for career guidance. Many of you have come from far off places. Sometimes you have homesickness, or sometimes you face some kind of other problems. You can basically confide into your mentor, faculty mentor. We have a psychologist, we have a medical facility, and each department conducts remedial classes. Remedial classes, sometimes because of communication, because of social strata, or sometimes there is difficulty in coping up with the course. So we conduct remedial classes later on at the end of the semester. I would like to emphasize here one more thing. My dear students, it is a CUET based admission process. और आपने बहुत सारे उसमें प्रोसेस में अपने प्रेफरेंसेस दिए होंगे। टॉप पर अपने मर्जी के कोर्स रखे होंगे उन प्रेफरेंसेस में। टॉप पर आपने अपनी मर्जी के कॉलेज रखे होंगे, और जरूरी नहीं है कि सबको वो अपनी मर्जी से वो कोर्स या वो कॉलेज मिला हो। उस सीयूईटी के प्रेफरेंस में हो सकता है क्योंकि आप दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहते थे, आपने सोचा होगा पॉलिटिकल साइंस करने का, आपको मिल गया हिस्ट्री, या कोई और कोर्स सोचा होगा, प्रेफरेंसेस में आपको कुछ और मिल गया। मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, याद रखें अपने जीवन में ऐसी बातें और इस तरह की संभावनाएं बहुत होंगी। अभी तो ये पहला पड़ाव है स्कूल से निकलने के बाद, कि जहां पर आप कुछ सोचते होंगे और आपको मिलता कुछ होगा। आपको उसी चीज को अपने अनुकूल कैसे बनाना है, उसको अपने लिए कैसे फेवर में कन्वर्ट करना है, ये आपके डिवोशन, आपके अपने ऊपर ट्रस्ट, आपके अपने डिवोशन, अपने फोकस पर निर्भर करता है। कैसे अगर आप चाहते थे हिस्ट्री लेना, आपको पॉलिटिकल साइंस मिल गया, या आप चाहते थे माइक्रोबायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री लेना, आपको माइक्रोबायोलॉजी मिल गया। अपॉर्चुनिटीज अथाह हैं और सभी कोर्सेज में हैं, ये मान लें आप। उसमें भी तो बच्चे आ ही रहे हैं ना। हो सकता है वो आपकी मर्जी का ना हो, लेकिन आप अपनी मेहनत से, अपनी डिवोशन से, अपने फोकस से उसको आप मर्जी का कोर्स बना सकते हैं। अगर आपने बना लिया तो आपको जीवन में कोई रोकने वाला नहीं है, कोई नहीं रोक सकता। सक्सेस विल बी सर्टेन फॉर यू अगर आपने ऐसा कर लिया। आप सभी कॉलेज का प्रोस्पेक्टस पढ़ लें, कॉलेज की मैगजीन देख लीजिए, कॉलेज की वेबसाइट विजिट कर लीजिए, तो आपको कॉलेज के बारे में, कॉलेज कैसे करता है, कैसे हॉलिस्टिक डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करता है, कैसे ध्यान रखता है अपने बच्चों का, वो आपको वहाँ से मालूम चल जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सारे करिकुलम में एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है अटेंडेंस का, क्योंकि आप रेगुलर कोर्स में आपने एडमिशन लिया है। जब आपने रेगुलर कोर्स में लिया है तो आपको क्लासेस भी अटेंड करनी होंगी, और क्लासेस अटेंड करने के लिए आपको 67% मिनिमम अटेंडेंस मेंटेन करनी होगी। और 67% अटेंडेंस अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो आपको सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन में बैठने नहीं दिया जाएगा। और अगर 67 से ऊपर आप अटेंड करेंगे तो आपको कुछ पॉइंट्स भी, कुछ मार्क्स भी आपको आपके इंटरनल असेसमेंट में या कंटिन्यूअस असेसमेंट में आपको मिलेंगे। एडवांटेज भी हैं, उधर से डिसएडवांटेज भी है। तो मैं सभी पेरेंट्स को गुजारिश करूंगा कि आप थोड़ा सा ध्यान रखें। आपको हर महीने आपके वार्ड की, आपके पुत्र या पुत्री की अटेंडेंस इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जो भी फ़ोन नंबर्स आपने अपने एप्लीकेशन में डाले हुए हैं उसके थ्रू सभी पेरेंट्स को हर महीने के एंड में एक मैसेज आपको मिल जाएगा कि कितनी परसेंटेज आपका वार्ड मेंटेन कर रहा है। दूसरी बात, जैसे मनोज जी ने कहा
हम सभी लोग 12वीं क्लास तक काफ़ी जगह पर डिपेंडेंसी रहती है। एक डिसिप्लिन्ड वे में स्कूल में पढ़ते हैं, समय पर घर पहुंचते हैं और घर पहुंचने के बाद फिर वही एक ड्रिल शुरू हो जाती है अपनी तैयारी की। तो एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड आप एक लाइफ स्कूल तक अभी लीड कर रहे होते हैं। और जैसे ही आप कॉलेज में आते हैं थोड़ी फ्रीडम मिल जाती है, कहीं थोड़ी, कहीं बहुत ज़्यादा। थोड़ी मैं वहाँ कहता हूँ कि जो दिल्ली के ही हैं, दिल्ली में ही रहते हैं, उनको तो फिर भी एक टाइम तो मेंटेन करना पड़ेगा घर पहुँचने के लिए। लेकिन जो यहाँ बाहर रहेंगे, दूर से आए हुए हैं, उनके पास तो अपने घर या अपने रूम पर पहुँचने का कोई समय, कोई वहाँ इंतज़ार नहीं कर रहा होगा। माय यंग फ्रेंड्स, कॉलेज में आप आए हैं, करिए, भरपूर एंजॉय करिए। ये 3 साल 4 साल ये कॉलेज के वो समय हैं जहाँ पर आप एंजॉयमेंट के साथ बहुत अच्छे अपने दोस्त भी बनाते हैं और लाइफ लॉन्ग ये फ्रेंडशिप चलती है आपकी। पर इस सब फ्रीडम के साथ, इस सब एंजॉयमेंट के साथ एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक ट्रस्ट के साथ आपको इस महाविद्यालय में आपके पेरेंट्स ने एडमिशन कराया होता है या आपको इतनी दूर पढ़ने के लिए दिल्ली इस विश्वविद्यालय में भेजा है। बस ये ध्यान रखें, एक बार सोच लें कि कहीं आप उनका ट्रस्ट तो ब्रीच नहीं कर रहे हैं। जो फेथ आप में दिया है, दिखाया है उन्होंने कि आपको फ्री छोड़ दिया है, आपको इतनी फ्रीडम उन्होंने दी है, उन्होंने आपके उन सारे सपनों को पूरा करने के लिए अपने जितने भी सैक्रिफाइस करने पड़े उन्होंने करे और करेंगे। आप सिर्फ उस ट्रस्ट और उस फेथ का एक बात माइंड में कर लीजिएगा, जब आपको लगे कि आप अपने दायरे से, अपनी फ्रीडम से, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज से थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं। ये सोचना बार बार बहुत ज़रूरी है और ये बहुत ज़रूरी है इस फेथ को इंस्टिल रखना। दिस कैंपस इज़ वेरी सेफ फॉर गर्ल स्टूडेंट्स। हमारे पास वुमेन एडवाइजरी कमेटी है, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी है, एज पर यूजीसी गाइडलाइंस फॉर्म्ड है, और काफ़ी सारे ग्रीवांस पोर्टल्स हमारे वेबसाइट हमारे कॉलेज में हैं। तो कभी कोई, वैसे तो कोई परेशानी नहीं है, फिर भी कोई अगर दिक्कत होती है, सो वी आर ऑल अवेलेबल फॉर दैट। सो with this all, I finally extend my heartfelt thanks to you for putting faith in our institution and giving us an opportunity to contour your career path to the service of our great nation. I wish you all the best for a fruitful and enjoyable journey of 4 years in this college at Ramlal Anand College. Wish you all the best. God bless you. Thank you so much, sir. College life begins with academics, and understanding the academic system is essentially important for every student. To guide us through the academic framework and introduce the library facilities available in our college, I invite Professor Seema Gupta, convener, Workload and Academic Affair Committee, on the stage. Respected principal, dear colleagues, students, and parents, a very warm welcome to all of you. It's my pleasure to welcome all the students to the beginning of a new academic journey. I would now like to share with you few brief details about the
undergraduate curriculum framework 2022, that is UGCF 2022, based on NEP 2020. This basically offers you a 4-year program designed around flexibility, multidisciplinary learning, skill and holistic development, multiple entry and exit, major and minor structure, research and entrepreneurship opportunities. As I said, it provides you with multiple entry exit opportunities. So you can see that it gives you opportunity to leave after first year, second year, third year, so on. So if a student, suppose a student of BSc Honors Statistics decides to quit after 1 year, the student gets an undergraduate certificate in statistics. Similarly, if the student decides to quit after 2 years, the student gets an undergraduate diploma in statistics. If the student pursues his course for 3 years and then quits, then he gets a BSc honors degree in statistics. And this is I'm giving in regards to example of BSc honors statistics, but whichever course you are pursuing, you'll get the certificate after 1 year, diploma after 2 years, BSc honors or BA honors degree after 3 years, and if you pursue the full course, that is up to the 4 years, then you get a BA BSc degree with research. Now, under UGCF 2022, there are a number of courses that are available. These different kinds of courses are DSc, DSE, then there is GE, SEC, AEC, and VAC courses. DSc courses are discipline-specific core papers. These are the foundational papers, or rather compulsory papers, that you study related to your program or the discipline that you have chosen. If you have chosen statistics honors, you will be choosing papers related to statistics. If you have chosen microbiology, you will be studying papers related to microbiology, so on, so forth. Then there are, and it gives you, for each paper gives you 4 credits. Then there are DSE, that is discipline specific elective courses. These are advanced papers or elective papers that are offered by the subject or the discipline that you are studying. So these are the papers related to, again, your discipline. They are also of 4 credits. Then there comes generic elective papers. Now these papers are very, very important. Each and every student has to study generic elective papers. But these generic elective papers are not the papers of your discipline. You choose a generic elective paper from some other discipline. So if suppose you are a student of BSc Honors Statistics, then you do not study generic elective being floated by the Department of Statistics. For example, the Department of Statistics in the first semester is offering basic statistics. So students of statistics will not choose basic statistics as their generic elective. They can choose any other generic elective paper being floated by the Department of Computer Science because it can complement their subject. They can study any other paper from being floated by the Department of Economics or Mathematics, and so on and so forth. Then there are AEC courses. These AEC courses are basically, these you will be studying in first 4 semesters, and there are 4 papers, out of which 2 are of Indian language and 2 are on environmental studies. You study the papers alternately. 2 papers in the first semester, if you are studying Hindi, then in the second semester, you will study environmental studies. Then again, in third semester, you will study Hindi. And then in fourth semester, environmental studies. Then there are skill enhancement courses. These skill enhancement courses are the courses of practical employability. And they also, many of them provide you hands-on learning, basically, in some subject. Like some of the courses are
computer science based course which can give you knowledge about Python, etc. Then we have value addition courses. These value addition courses are based on ethics, culture, communication, constitutional values, sports, personality development, etc. These three types of courses, AEC, SEC, and VAC, they are of 2 credits each. Now, what do I mean by a credit? A credit is basically, it means 1 hour of lecture or tutorial per week. Or in case of those subjects where there are practicals, 1 credit is equivalent to 2 practical classes per week, or field work equivalent to 2 classes per week. A student generally is supposed to earn 22 credits per semester. And if you are earning 22 credits per semester, then you basically earn 44 credits per year. Each year, you are able to earn 44 credits. A student needs to earn 132 credits to get a BSc honors degree and 176 credits to basically get a BSc honors degree with research. That is after completing all the 4 years. Then we also heard about major and minor in the beginning. So what are these major and minor papers? Major papers are the subjects which are of main focus. These are basically compulsory papers being floated by the respective department or the department from where you are pursuing your honors degree. Then minor papers, as sir also mentioned, these minor papers you basically gather by doing generic elective courses. Generic elective courses means the courses or the papers that are being offered by some other department other than your parent discipline. For example, if you, how do you basically get a minor degree? For that, if suppose you are a student of statistics honors and you choose computer science as your generic elective, then to get a minor degree, you need to continuously do a generic elective in computer science for 7 semesters. That is, 4th year is very, very important. You will have to do 4th year because before 4th year, there are only 6 semesters. Even if you do a generic elective in each semester, you get only, you are able to do only 6 into 4, that is 24 credits. But you require 28 credits. So you need to do the 4th year as well if you want a minor degree in a subject. So in case you are a statistics honor student and you choose computer science as your generic elective, then you need to do 7, you need to study 7 generic elective papers of computer science minimum, or you study in generic elective computer science up to semester 8 to get 28 credits. So in all, there are 80 credits for major, and in the process, you will get a major degree in statistics. So there are 80 credits for major and 28 credits for your minor subject. Next. Now here is a brief description of your semester 1 and semester 2 papers. In semester 1, as you can see, there are 3 discipline-specific core papers, each of 4 credits. So you, after clearing them, you get 12 credits. Then there is a paper on generic elective where you will be choosing some paper from some other discipline, not your parent discipline. Then 1 AEC, which in case of these science courses for the timing will be Hindi. Then 1 SEC and 1 VAC paper, which are being floated by almost all the departments of the college. The same pattern is followed for semester 2. In semester 3, we see that more or less rest of the things remain same, but there is one change. There are 2 changes basically.
you still have to study 3 disciplines, specific core subjects. But now you can either study a GE paper or a DSE paper, that is a discipline specific elective course, which is an advanced paper or an elective paper being offered by your own parent department. So you can choose between the two. Then you study AEC, the same subject that you studied in semester 1. If it was Hindi, again you will be studying Hindi in semester 3. Then with SEC paper, you have another choice, that is IAPC. This means internship, apprenticeship, project, or community outreach. So you can actually go through the guidelines from the website, how to go about it. But if you do this internship or community outreach kind of thing, then you can earn 2 credits instead of doing or studying an SEC paper. This is the difference. And then one more back paper, similar pattern for semester 4. Semester 5, now the difference is that you still have 3 DSE papers, but now you have 1 generic elective, 1 DSE, and SEC or IAPSC. There are no more AEC and WAC papers. Similar pattern for semester 6. Let's move on to semester 7 and 8. Now you have to study 2 discipline specific elective courses, no more DSC. Then you will be studying 1 generic elective, and then you will be doing a research project or dissertation or entrepreneurship, which will fetch you 10 credits. So the same pattern is followed for semester 8 as well. Next. ये सारे आगे कर दो, ये BA program के लिए हैं. There are no students from BA program as such. So here I am sharing a list of generic elective papers that are being floated by the college. You can read the papers that are being offered by different departments of the college. But I would like to mention about 2 that you can see in different colors. There is 1 generic elective that is being offered by the Department of BMS, that is Bachelor of Management Studies. In addition to the course that they are offering, they are also offering a generic elective on entrepreneurship. This is a set of papers that are related to entrepreneurship. And this is open to all. Even the students of BMS can opt for this particular paper. Similarly, there is a paper that is being floated by the Department of Computer Science. This is related to generic elective on data analytics. Again, this is a course that is open to all. Even the students of computer science can opt for this particular generic elective, that is data analytics, right? And the paper being offered is Python and data fundamentals. Next. Then you can see it is the list of the SEC papers that are being floated by the different departments of the college. Now here I would like to mention one thing. Many students, they are always under the impression that you cannot choose an SEC or WAC also being floated by your department. No, there is no such restriction. The restriction is limited only to generic elective courses. For SEC courses and for WAC courses, you can choose any course being floated by any department. But it has to be the course floated for the first semester. So here is the list of SEC courses being floated for the semester 1. Then we move on to the list of WAC papers. These are the WAC papers being floated by different departments of the college. And you can choose any one of them that suits you. There are some papers that you would definitely like to choose if you have certain plans for future, like some papers related to political science, etc. So it's up to you which paper you would like to choose. This is how you will be choosing your subjects, SEC, GE, and WAC papers from Smart Prof. Now I come to AEC courses. As I said, in AEC there are 2 types of courses, Indian language courses and
environmental studies. So, in case of AEC courses, Anand College only offers Hindi language as the language in the college, and there are 5 options A, B, C, D, E that can be opted, but it all depends upon your eligibility criteria. If you have studied Hindi up to class 12th, you will have to study Hindi A. Likewise, up to 10th, you will have to study Hindi B. And you can read it from the screen that if you have studied Hindi up to class 8th or below, then you study Hindi C. For foreign students, it is Hindi D. And for those Indian students who have not studied Hindi at all, they can study Hindi E. In addition to this, for Indian languages, if you want, you can study other Indian languages as well, but the college is not offering these languages, but you can study these languages from the cluster colleges. So you can see that there are a number of colleges that are being offered by the Delhi University, like Assamese, Bengali, Punjabi, Sanskrit, Manipuri, Tamil, Telugu, etc. So you can read the whole list from the screen. But for this, you will have to join the cluster college. Now, when I say the cluster college, it means there are many of these languages which are being offered by the Department of Modern Indian Language, Delhi University, and they offer online classes for some of these languages. So you can attend those online classes, or you can also study some of the languages that are being floated by nearby colleges like Venkateshwara College, Aurobindo College, etc., where you can study some of the languages like Telugu, Tamil, etc., in offline mode. If you want some further details regarding this, you can contact Professor Seema Gupta from the Department of Statistics. This was all about as far as UGCF was concerned. Now I'll just share a little bit information regarding the library of the college. The library of the college it's a large library which is fully air conditioned. It's a very well lit library with around 75,000 books. The library has subscription to 40 journals, 16 newspapers, including both Hindi and English. The library has 8 Kindle readers, 6 desktops. In addition to these 6 desktops, 2 desktops which are meant for basically visually challenged students. Then 6 DAISY players, keyboard, multilingual keyboard scanner and reading companion, again for visually challenged students. Sugamya Pustakalaya annual membership for visually handicapped students can also be taken from through the library. The library has access to the plagiarism software Turnitin, which to maintain high standards and ethics in research. If any of you are first year students, but still if any of you actually write an article or some kind of paper, and you want to get the plagiarism checked for that, you can go to the library and access this particular facility. Rules and regulations related to the library are displayed on the library notice board. Library also offers a facility called book bank facility to the needy students. You can opt for this facility only after the proper documentation. Each student gets 3 library cards. You will be getting these library cards once you get your college iCards. After producing your college iCards, you will get your library cards. Each library card will allow you to keep a book or issue a book for 15 days. Seating capacity of the library is around 120 seats. That's all from my side. It was a pleasure sharing this information with all of you. Best of luck and thank you very much. Sorry, it is from 8 a.m. to 8 p.m. The timing for the library is from 8 a.m. to 8 p.m. Thank you so much, ma'am. Technology has become an integral part of education, and understanding our ERP system, timetable, and Smart Prof portal
will help students navigate their academic journey smoothly. For this informative session, I now invite Dr. Sandeep Bhatt, Convener, Timetable Committee, Department of Mathematics on the stage. Sir. A very good morning to respected principal sir, my colleagues, all the students and their parents. I will be guiding you through the ERP software timetable committee and all the processes that are lies behind this. Now, first of all, most of the students who are already in first year, already got admission in the first cutoff may have seen the ERP software and gone through the campus. But those students who have received the admission in the second cutoff, and maybe some of you will be admitted in the upground who are available here, I will give you a brief layout of the college campus. This is the ground floor. And now at the front, so this is the front and this is the back side. So on the left side, we have administration office, we have principal's office, we have staff room, and most of the classes will be on the right side. This is the central lawn, that the blank empty space that we see in the middle, and all the classes from 1 to 14 will be on the ground floor. Here we have amphitheater ground floor that we are sitting right now. We have a canteen and library, and the canteen are on the left side. Principal's office will be on the top bottom left, and the admin office will be in the middle. Now, first floor, we have classroom numbers from 15 to 46. This floor, now you can see on the left side, we have staff room, the girls' common room, and most of the classes are, as you can see on the right side. Some are highlighted, some are in different colors. So white rooms are all your classrooms. Yellow ones are the computer labs or various departments like stats. We have mathematics, we have commerce, we have BA program. And on the right side, you can see some are in the blue. These are the Department of Microbiology and labs of Microbiology department. On the bottom, we have BJMC department, their lab. They have a media production center where you can create your own education related contents. They have proper recording unit, proper soundproof recording rooms. On the left side, we have geology department and their labs. And on the left side, we have mathematics lab and the mathematics department. Now on the second floor, we have some room number 17, and some PC classes, that is PC 1 to PC 16. Now on the left side, we have the Department of Computer Science and their lab. On the right side, these are all the classroom, and on the red, we have radio, Tarang. And here you should go after the orientation and see how we use it for broadcasting various education related contents. So this is all about the second floor, and we have now on the amphitheater. So this is the amphitheater. On top of that, we have another amphitheater like this. So ERP has been introduced with the guidance of Rakesh Kumar Gupta in our college since January 2024. The highlights of the software are timetable management, attendance. We have attendance that is real time. So it's like when you take a class, the teacher or the faculty member will take your attendance and you can instantly see whether you have received that attendance or not. As everyone has mentioned that you need to maintain 67% attendance or more to get either your marks or to be eligible for final examination. So in case you have some issue, like sometimes what happens that there are 80 students in your class and sometimes the teacher forgets to mark your attendance. So at that time, you can contact him, you can tell him that I was present, so your attendance can be recorded. We have internal assessment. Every test you take, every assignment you submit, all those marks can be updated by faculty and you can see how many marks you are getting on your INCA and you can contact the teacher for any queries. We have placement opportunities also are posted continuously, regularly on the ERP portal. So you can see which one suits you and apply for that particular one. And notices or announcement regarding all activities are also posted on ERP. These are some of the highlight features. Now, all those students who are in the first cutoff, they must have gotten this login ID. All of the students in the second cutoff has received their login credential via the email they have provided with the admission form. In case there are students who have received admission in the upgrade round, so those will not have received any information regarding this. They will receive this after
the admissions of upgrade round are over. Now, if you want to log in this, there is a simple, you can simply search RLAC ERP or RLAC Smart Prof in Google and you will see the first link. Or you can visit our college website, and on the top of the college website, the links are there. When you will log in, you will get this kind of screen and you have to click the student because and then you can log in as per the record. Now, as soon as you will log in, you will see this particular screen, and the first thing that you will see is today's timetables. On the top, you can see we have two notifications. So in case some teacher, some faculty has posted some class material or some notices are posted by the admin department or the ERP committee, you can clearly see them. These are the today's classes. There is a class paper, then we have faculty name, room number, and the time of the particular class. Now, if you will see on the left side, we have some views. So there is today's timetable, there is weekly timetable, there is my timetable. So there are three different kind of timetable views that are available on ERP. Weekly timetable, you can say for which day we have particular which classes, like Monday, Tuesday, Wednesday, like this. And my timetable will show you the whole classes of all the week, all days. And this is the this one is for attendance summary. You can see how many lectures, how many labs, how many tutorial classes that you have attended and the percentile. And this is the view of this. Now you can see this one. These are the classes of whole week that you have to attend. Now all the students in the second cutoff, who if you have logged in, you can see the classes everywhere except these highlighted slots if you have checked. Okay, so these classes are the elective papers. Generic elective, value addition course, skill enhancement course, or AC. Now, these classes will only appear in your ERP once you fill out the option selection form. So, you have to make sure you are admitted today and go through this ERP software and fill the choices for your papers. As soon as you fill your choices for elective papers, you will instantly see this in your timetable. Now this is mandatory. You will see this kind of form. Every department will offer papers and you have to make sure fill the papers as soon as possible because every paper has a limited number of seats. So in particular specifically for SEC, VSCs, in case the form gets, this paper gets enough number of students, you will not be able to pick that particular choice. So you have to be quick about that. These are the assignment study material. In case the faculty member shares any material with you, you can see these things here. Next is, these are the, now you will be assigned some faculty members. जो भी आपको classes आपके लेंगे. In case you want to contact those faculty members, the email IDs will be available through ERP. Even though everything is available on the college website, but sometimes it might take you where the faculty is there. But from here, you can directly email them. This is the notice board. All the notices will be posted here. And this one is again another thing. Can you go and talk? On the left side, you can see there is one last option, placement and internship opportunity. So when you will click that, the particular separate window opens and all the information related to placement and internship will be posted here. So you can frequently visit this particular option and check if there particular internship or opportunity is there that you can opt for. Since our Smart Prof RLEC ERP or software is also available on Android and iOS, so you can download this. Now, see the options are limited in this app. So like option paper selection, you can only see this through the web login. So from this app, the main thing is you can see the weekly classes, you can check your attendance, you can check your marks, and that is all. So these are the limitations. Now you can see on the third thing, you can see the daily classes. So this was for sample only. So there's only one class mentioned. In case there are multiple classes, you can see for which day you are present or absent. Everything will be available there. So that is all. Thank you very much. Thank you so much, sir. College is much more than classrooms. It is also about discovering your talents, pursuing your interests, and creating lifelong memories. To introduce the various societies and centers of our college, I now invite Dr. Mukta Datta Majumdar, convener, Arts and Culture Committee, on the stage to go through the societies of our college. Thank you, Anushka. Good morning, Principal Sir,
my dear colleague, students and parents. A warm welcome to all our dear students and respected parents. Today is a special day as we welcome the new batch of enthusiastic young mind to our college family. At our college, we firmly believe that education not confined to textbook or examination. Our goal is to provide holistic education that nurtures the intellectual, emotional, social, physical, and ethical development. We strive to shape individuals who are knowledgeable, confident, compassionate, and socially responsible. We are proud to foster a culture of respect, inclusion, diversity, and mutual understanding, where every student feels valued and empowered to learn and grow. To support your holistic development or college support our holistic development, college gives equal importance to co-curricular and extracurricular activities. We have a wide range of societies and club to cater diverse interests such as literature, music, dance, debating, sports, social services, and many more. We encourage every students to become an active member of at least one society. The society conduct audition at the beginning of the academic session. Students member and elected office bearer participate in planning, decision making, and organizing various programs under the guidance of faculty convener and coordinators. These experiences prepare you to become confident leaders and responsible citizens. Now I will give you some information about the different societies of the college. This is of the multidimensional societies, that is debating, creative writing, next quiz, film and photography club, eco club, and the green campus. E-Cell Inactus, Entrepreneurship and Technology Development, Cell and Career Counseling and Placement, and Civil Service Examination. Some listed already the annual magazine where students can show their talent by writing poems, articles, all these things. Season is a wall magazine. Campus Connect is a newsletter published by Hindi Patrakarita department every month, and Shambhav is again published in twice in a year. These are the some of the glimpses of activities and achievement of the colleges. This is worth mentioning that the students of our college actively participate in various societies and consistently excel in academics. JNU, IIT Kanpur, Delhi, Kharagpur, BITS Pilari, and many more. That is, all students are advised to visit the college website to check the orientation and audition schedule of various societies. Your years in this college will shape not only your career but also your character. Make every opportunity count because the choices you make today will define the person you become tomorrow. May your years here be filled with learning, friendship, achievement, and unforgettable memories. I wish each one of you a successful, meaningful, and rewarding college life. Thank you. All the very best. Thank you so much, ma'am. A healthy academic environment is built upon discipline, responsibility, and mutual respect. To brief us more about discipline, anti ragging policies, NCC, and NSS, I now invite Ms. Pragya Deshmukh, Convener, Discipline cum Anti Ragging Committee, Department of English, on the stage.
A very good morning to our respected principal, sir, my esteemed colleagues, dear parents, and my dear students. It gives me immense pleasure to welcome you all to one of the most reputed colleges of College of Delhi University, which is Ramlal Anand College, and its extended family. I'm sure beginning college journey is a very exciting journey. It brings a lot of dreams, aspirations, planning, looking forward to making new friendships. Yet, for both students and parents, it brings little anxieties. I'm here to address those anxieties and those apprehensions. And the purpose for today is very straightforward and simple. And I'll bring you straight to it, which is that I am Pragya Deshmukh from the Department of English, also the convener of Anti-Ragging Cum Discipline Committee of the college. I'll brief you through the measures that the college adopts very strongly, in compliance with the University of Delhi guidelines from time to time, and also the anti-ragging and UGC compliances that are dispersed through the universities from time to time. I'll take you first to the vision and mission of the anti very briefly. We work here in tandem throughout the calendar year to make sure that your stay here is absolutely free of anxiety, reassuring, and at the same time, which allows you to focus on your academic journey in the college. If you see, I will not take you because of the paucity of time through each of the vision and purpose, but I'm sure you can look at it. I'll take you to the next slide now. This is a very important part of your understanding of your rights and duties here in the college. There are two ordinances that the University of Delhi has, Ordinance 15B and 15C, that promote safe, respectful, and disciplined campus environment. It very clearly spells out the punitive punishment for ragging or indulging in acts of ragging, while at the same time it also ensures your rights that are protected and safeguarded within the campus. Will please take you to the next slide. This is a very important part of your understanding of how you're going to negotiate this new space. If you have taken a round around the campus, you must have seen these flex boards where the mechanism for dealing with complaints related to ragging are spelt out. We work both within and outside college. There are a few mechanisms that are spelt out here. The drop box, which is right outside, the corridor from where you moved. There's a drop box prominently placed. If you face any sort of intimidating acts from your fellows, your seniors, there is a written complaint that you can put in there. You can directly email it to our principal on the email that is given here. Not now, but when you take the route of the college, when you move to classrooms, please click a photograph of these flex boards so that they become ready and handy information for you to be used in case of need. Then there is the college website works very well in handling these complaints. You have a dedicated tab there. The link is given here. You go to Ramlal Anand College. There is a tab at the top right which says click on complaints and grievances. You select grievances and complaints that you have, and there you will find that you can write in or submit complaints related to ragging, and similarly other kinds that I'm going to just explain a little later. Then you can obviously, we are here as members of the Anti-Ragging and Discipline Committee, you can directly contact us, right? Without any inhibition or fear. We are ready to help you out. These, there's the convener's number, the email ID. Then we also have the co-convener's number and email ID. Feel free to contact us in case you need any assistance from us any time of the day. Then there is the anti-ragging mechanism that we follow as a part of being a constituent college of the university. And you here on the screen, you see some of those mechanisms being spelled out here. Obviously, you can inform the nearest PCR. The police control number is given. The UGC anti-ragging, toll-free number is given here. At the same time, because we are very friendly with the mobile apps, you can also download the Himmat app that is developed by the UGC to specially to complaints related to ragging and harassment.
Then you have the proctor's number, email ID here. You also can note down the Joint Control South Campus phone number. Please make sure, right now obviously you are full of anxiety because you're the first years, but from next year on you're going to be responsible seniors, so make sure that you do not get ragged, and from next year on you also do not indulge in any acts of ragging. For this, very soon you will receive a notification from the college where you will be asked to fill an anti-ragging affidavit and make yourself compliant to these guidelines. The college will inform you and we will update you regarding this. Here, what you see on the screen is the complete constitution of the anti-ragging committee with all its members, their contact numbers displayed for your convenience. Please note that in addition to these members who work throughout the year tirelessly ensuring a campus experience for you, we also constitute anti-ragging squads for the beginning months of every session, ensuring that faculty members are there on the campus taking regular rounds, ensuring that the students' stay here is absolutely safe and secure. Moving on, similar measures are ensured through various other committees, as our dear principals are also initially introduced. We have the Internal Complaints Committee, or the IC. The role of the committee, if there is a gender-related, complaint or any kind of you may be facing at the hands of, let's say, a junior or a senior classmate, or maybe any other component of the college family, you may directly contact the ICC and put in a written complaint there. Obviously, we all know that it's a very serious nature of complaint, and therefore the ICC is a very active committee in the college. Then you have, can you just go a little bit up? Yeah, these are the members. The presiding officer is Dr. Ritambara Mishra, and you have the other faculty members here, Dr. Rita Jain, Mr. Ankit Kumar, and we also have a legal advisor from outside, Ms. Sakshi Bhayana. Please, let's move on to the next slide. There is another very important committee that is constituted for handling the grievances of the students. There may be grievances which may relate to academics, beyond academics. For this, we have the Students' Grievance Redressal Committee. Again, you can complain. In case you have any concerns, then go back to the college website, look at the grievances tab and put in a complaint there in case you want to reach out to any of us. These are the members of the committee. In addition to some of these strict disciplinary handholding measures, which are meant not to just discipline you, but to make sure that you feel a part of the institution that you're going to eventually be proud of and make proud the institution itself. There are a number of other measures that the college takes in order to ensure that your experience here is one which is full and replete of learning and positive experiences. We have a dedicated counselor of the college who comes here regularly, visits. Obviously, anything that you share in terms of your psychological, emotional, and other forms of anxieties, peer pressure, you can obviously go to the counselor and talk to her. And rest assured, anything that you discussed with her is kept absolutely confidential. Then we have, as Sir said earlier, we have a mentor-mentee program to further take you through your academic journey. And each student, as Sir explained earlier, will get a teacher mentor here. Let's move on to the next slide. I now come to the NCC unit. Just a while ago, you saw, crisply dressed young lads and girls, part of the NCC of our college. And you can obviously make out young students, you just see them, you know that they are here not just to make you, see that they are present, but also to ensure the kind of pride that they feel by wearing those uniforms. Our NCC of the college is a very, very strongly placed unit. We know that Professor Major Sanjay Kumar Sharma, who is an associate NCC officer and the university NCC coordinator as well, is a part of Department of Hindi. And we have Dr. Sakshi, who is the program officer who handles the girls' wing. Mind you, we both, at the college, we have both the
the males wing or the boys wing and also the girls wing, which was introduced in the year 2024. These are some of the achievements, the current intake, the girls cadets being 26. These are some of the statistics, but let me tell you that the statistics you will also get to know by and by. But what is important is that the NCC, your involvement in the NCC, maybe you may never wear a uniform and represent the country on the borders, but being a part of the NCC, NCC will inculcate, and not just NCC, but also NSS will teach you values that will carry the very central values to any human being, right? And therefore, working towards these institutional, bodies is going to make sure that you become ultimately an able citizen and a true patriot. I'll just take you to some of the students who've been very recently. You can see the statistics here. These are the three, this year itself, newly commissioned students from RLA. Lieutenant Akshat Katoj, Abhijit Bhanwala. These were students like you, right, who have not only made our college proud, but also are making the country proud. You see the past decade regiments and regiments, 35 plus officers have been, have joined from RLA itself in the army and the forces. And they're not just joined the army, the naval forces and all the wings of our Indian Defense Forces. There are some, in the cadets under training here, the JUO, Cadet Saksham, and Alok. Yes, these are some of the other statistics related to our rank panels. Let's move on to the next slide. Yeah, this is for your consumption. The cadets participate in a number of activities all through the academic year, whether it's the Republic Day Parade, whether it is the Youth Empowerment Program or similar exchange program and similar activities. The NCC cadets keep themselves involved throughout the year, while also making sure that they dedicate justifiable time to their studies as well. This is the NSS, as the name itself suggests, the National Service Scheme. Our program officer is Dr. Anurag Sharma, who's present here. Again, like the NCC, the NSS also instills and inculcates feelings of patriotism, dedicatedness, service before self, you before me. Some of the highlights of the NSS work through the last year is being showcased here. Right, whether it is the social, involvement, whether it is the social work or any other camps, from time to time, our students enroll in NSS, and you also have the opportunity of serving the society while also learning and experiencing. Let's move on, please. Yeah. Some of the glimpses of the kind of work that the NCC and NSS cadets do throughout the year. Okay, as a part of my closing, I would want to bring to your attention that, as I just said at the beginning, college is not only about discovering yourself, it is also discovering a whole new world, developing new friendships, making new associations. Your association not just with your class, your peers, but the associations you will make with your faculty members who will handhold you throughout your career paths, and make sure that your journey is not just one which is progressive, but also free of hurdles, right? Free of emotional imbalances. Here, I think I would also assure the parents that you have you have decided to send your kids to an institution that believes in students first policy, whether it is through discipline and similar measures, or it is through handholding and taking through them through their journeys, whether in their academic lives or overall grooming and conditioning and and evolution. Rest assured, and this is probably one, I'm sure I echo everybody's sentiments here, that we at RLA believe that the students are our first and best priority, and we will make sure that your
responsibility is not just your responsibility in the sense that you've handed over your kids to us. Rest assured they'll be fine. Thank you. Thank you so much, ma'am. Sports teaches teamwork, leadership, perseverance, and discipline. To introduce the sports facilities and opportunities available in the college, I now request Professor Kumar Sharma, Senior Faculty at Department of Physical Education, to kindly address the gathering. Good morning, all of you. Respected Principal Sir, Admission Committee, Manoj ji, faculty members, parents, and dear students. आज आप सभी स्टूडेंट्स के जीवन का ये एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है. Welcome to Ramlal Anand College, a place where you dream, hard work, and determination will shape your future. College life केवल डिग्री अर्न करने के लिए नहीं है, बल्कि यह अपनी पर्सनैलिटी, स्किल्स डेवलप करना, लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप बनाने और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने की यात्रा है. एक विद्यार्थी तभी संपूर्ण रूप से विकसित हो सकता है जब वह एकेडमिकली स्ट्रांग होने के साथ साथ फिजिकली फिट, मेंटली स्ट्रांग और इमोशनली बैलेंस्ड भी हो. इसी सोच के साथ रामलाल आनंद कॉलेज डिपार्टमेंट फिजिकल एजुकेशन इसी उद्देश्य को लेकर कार्य करता है. इसलिए हर स्टूडेंट को किसी ना किसी खेल या फिजिकल एक्टिविटी में अवश्य जुड़ना चाहिए, जिससे कि आप सबका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो. यही हमारे रामलाल आनंद कॉलेज का उद्देश्य है. और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम बच्चों के लिए अपने कॉलेज के अंदर जो एक्टिविटी, जो स्पोर्ट्स हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे माई सेल्फ प्रोफेसर प्रदीप शर्मा और डॉक्टर विशाल गोस्वामी, जो आपको डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन के बारे में इस पूरे सेशन में, पूरे सेमेस्टर में आपको जो है एक्टिविटी कराएंगे. अब मैं वो गेम्स, आगे थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दीजिएगा, मैं वो गेम्स बताना चाहूँगा जिसमें आप अपना एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. हमारे यहाँ पे एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, रेसलिंग, बास्केटबॉल, ताइक्वांडो, फुटबॉल, जूडो, कबड्डी, चेस, खो खो, क्रिकेट और टेबल टेनिस, मैन एंड वुमेन, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए ये फैसिलिटीज आपके यहाँ पे अवेलेबल है. कोई भी बच्चा इन एक्टिविटी को ज्वाइन कर सकता है. इसके साथ ही हमारा कॉलेज 3 फेज पे काम करता है. एक वो बच्चे जो बच्चे स्पोर्ट्स में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, स्पोर्ट्स में नेशनल लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, स्टेट लेवल पे अपने कॉलेज की टीम में पार्टिसिपेट करके और वो कॉलेज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. उसके साथ सेकंड फेज में जिन बच्चों ने आज तक कभी कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन नहीं किया है, जनरल बच्चे हैं, इस एक्टिविटी को पार्टिसिपेट कर सकते हैं. वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में आके अपना नाम वहां पे आप मेंशन करा दीजिए, रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, और जो भी आपके फ्री पीरियड होते हैं आप उस फ्री पीरियड में वहां पे डिपार्टमेंट में आके इन गेम्स के आप इंस्ट्रूमेंट इशू करा के ग्राउंड में एक्टिविटी खेल. अब मैं आपको अपने कॉलेज, जो हमारे स्पोर्ट्स के बच्चों को, जो हमारी स्पोर्ट्स की टीम है, उनको हम कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में बताना चाहूंगा.
जो स्पोर्ट्स में हमारे टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी रेगुलर सुबह प्रैक्टिस होती है। उनकी सुबह प्रैक्टिस 7:30 to 9:30 उनकी प्रैक्टिस है। उसके लिए हम डेली उन बच्चों को जो रेगुलर प्रैक्टिस पे होते हैं, उनको 60 रुपीज की रिफ्रेशमेंट, काइंड ऑफ रिफ्रेशमेंट, जिससे कि वो प्रैक्टिस करने के बाद अपने आप को हेल्दी रख सके, न्यूट्रिशन उनको प्रॉपर मिल सके, तो वो कॉलेज उनको प्रोवाइड कराता है। उसके साथ साथ इन गेमों के कोचेज वहां पे अवेलेबल होते हैं, जो उन बच्चों को कोचिंग देते हैं, जो गेम्स अभी हमने आपको बताए हैं। उसके बाद बच्चे को जिस टाइम वो टूर्नामेंट खेलने जाता है, चाहे वो इंटर कॉलेज खेलने जा रहा है, या वो कोई स्टेट खेलने जा रहा है, या फिर वो नेशनल लेवल पे खेलने जा रहा है, तो कॉलेज उसको कन्वेंस भी जो है हम यहाँ से उसको प्रोवाइड, कन्वेंस के तौर पर, कि अगर उसका जाने में किसी मेट्रो से या किसी और उससे जो भी उसके एक्सपेंस, कॉलेज उसको जो है प्रोवाइड कराते हैं। इसके साथ साथ जो बच्चे रेगुलर प्रैक्टिस पे हैं और अपनी प्रैक्टिस की वजह से कोई क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, या कोई टूर्नामेंट है उसकी वजह से अगर वो क्लासेस उनकी नहीं वो अटेंड कर पा रहे हैं, तो स्पोर्ट्स वाले बच्चों के लिए उनको उस टाइम की अटेंडेंस का बेनिफिट जो है वो उनको कॉलेज, जो भी बच्चा हमारे स्पोर्ट्स टीम में होता है उसको कॉलेज की तरफ से स्पोर्ट्स किट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स वो यहीं से ही उनको प्रोवाइड किए जाते हैं। और साथ ही हमारे बॉयज एंड गर्ल्स के लिए स्पेसिफिक हमारे चेंजिंग रूम है, कि वो प्रैक्टिस अपना करने के बाद चेंजिंग रूम में जाके चेंज करके अपनी क्लासें अटेंड कर लेते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। इसके साथ साथ कुछ अवार्ड्स जो है अपनी तरफ से वो मैं बताना चाहूंगा, कि कॉलेज में अगर कोई बच्चा इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेशन करता है और पोजीशंस लेके आता है, तो इंटरनेशनल लेवल पे अगर फर्स्ट बच्चा कोई लाता है तो कॉलेज 1 लाख रुपीज उसको जो है रिफंड करता है, और उसकी फीस भी रिफंड करता है, और 1 लाख रुपीज उसको कैश प्राइज हम देते हैं। ऐसे ही सेकंड पोजीशन के लिए 80,000, थर्ड पोजीशन के लिए 60, पार्टिसिपेशन 50,000 रुपीज। नेशनल लेवल पे अगर बच्चा पार्टिसिपेट करता है तो उसको 50,000 है, फर्स्ट पोजीशन पे उसको 10,000, सेकंड पोजीशन पे 8,000 एंड और फीस रिफंड होती है उसकी। ऐसे ही इंटर कॉलेज में अगर कोई बच्चा पोजीशन लेके आता है तो उसको 5,000 फर्स्ट पोजीशन, 3,000, 2,000 एंड फीस रिफंड। इसके साथ साथ मास पार्टिसिपेशन जो बच्चे का करने के लिए हमारा इंटर डिपार्टमेंट टूर्नामेंट अब ऑर्गेनाइज करते हैं, जो कि हर एक डिपार्टमेंट की टीम्स जो है वो इंटर डिपार्टमेंट में पार्टिसिपेट करती है, जिससे कि सिर्फ स्पोर्ट्स वाले बच्चों को ही एक टीम में खेलने का जो है अवसर प्रदान ना मिले, जबकि आपके हर एक डिपार्टमेंट के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये तो कुछ एक्टिविटीज जो हमारी होती हैं, उसके साथ साथ जैसे आपको बताया गया कि एकेडमिक लेवल पे भी एक इलेक्टिव और वैल्यू एडिशन कोर्स जो है, तो डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन जनरल इलेक्टिव में फिटनेस एंड वेलनेस पेपर जो है वो इंट्रोड्यूस करता है। तो जो बच्चे अपना फिटनेस एंड वेलनेस फिजिकल एजुकेशन का पेपर ऑप्ट करना चाहते हैं, तो वो फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 7th सेमेस्टर तक जो है इसको एज ए माइनर डिग्री फिजिकल एजुकेशन में भी उसको ले सकते हैं। ऐसे ही वैल्यू एडिशन कोर्स जो कि आपको बताया था, उसमें भी फिट इंडिया करके हमारा जो है एक हमने अपना जो है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ने पेपर फ्लॉट किया हुआ है। तो जो भी बच्चा ये पेपर ऑप्ट करना चाहता है वो पेपर ऑप्ट कर सकता है। इसी के साथ आई विश यू ए हेल्दी, सक्सेसफुल एंड मेमोरेबल कॉलेज लाइफ। और आप इसी तरह हर एक एक्टिविटी में, बच्चा मेरी यही रिक्वेस्ट है कि किसी ना किसी एक एक्टिविटी में जरूर पार्टिसिपेट करें। और एक बात और बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे हर सेमेस्टर में एक फिजिकल फिटनेस अवेयरनेस कैंप लगता है, जो डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे कि आप अपने फिजिकल फिटनेस पैरामीटर्स के बारे में जान सकते हैं कि आपकी क्या फैट परसेंटेज है, क्या आपकी बॉडी एज है, क्या आपका विसरल फैट है, जिससे कि आप अवेयर होके अपनी हेल्थ के प्रति जागरूक होके अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।
Thank you so much, sir. Our college believes in creating an inclusive, supportive, and accessible environment for every student. To introduce the Equal Opportunity Cell, SUGAM, and the Northeast Student Welfare Society, I invite Dr. Kuldeep Chauhan, convener, EOC, Department of Statistics, on stage. थैंक यू अनुष्का। परम आदरणीय प्रिंसिपल सर, कन्वीनर एडमिशन कमेटी डॉक्टर मनोज कुमार, रेस्पेक्टेड फैकल्टी मेंबर्स और सबसे जरूरी मेरे प्रिय छात्र छात्राओं और यहाँ उपस्थित सभी अभिभावक, सभी को और हार्दिक स्वागत। जैसे प्रिंसिपल सर ने कहा, हमारा कॉलेज एकमात्र कॉलेज है जो दिल्ली विश्वविद्यालय में फुल्ली एयर कंडीशनल है। लेकिन कहते हैं किसी भी संस्थान की असली पहचान केवल उसकी बिल्डिंग से नहीं बल्कि इस बात से होती है कि वहाँ सभी को कितना सम्मान और कितना समान अवसर। मैं अपनी बात एक बेसिक क्वेश्चन से शुरू करना चाहता हूँ। जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं, क्या आपको सभी के स्ट्रगल एक जैसे दिखाई देते हैं? थोड़ा और मॉडिफाइड करूँ, क्या सभी स्टूडेंट के स्ट्रगल एक जैसे दिखाई देते हैं? जवाब होगा नहीं। तो कोई फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है, तो कोई फिजिकल चैलेंज के बावजूद अपने सपनों का पूरा करने की कोशिश कर रहा है, तो कोई अपने घर परिवार से हजारों किलोमीटर दूर यहाँ आकर अपनी नई पहचान बनाने आया है। लेकिन इन सब की एक कॉमन एक्सपेक्टेशन है, उन्हें आगे बढ़ने का समान अवसर मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। मुझे गर्व है कि प्रिंसिपल सर के प्रयासों से हमारा कॉलेज सिर्फ इस सोच को शब्दों तक सीमित नहीं रखता बल्कि अपने कार्यों से इसे सच साबित करता है। इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए हमारे कॉलेज में 3 महत्वपूर्ण कमेटियां हैं, जो हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल, दैट इज ईओसी, सुगम, डिफरेंटली एबल्ड वेलफेयर सोसाइटी फॉर डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट, एंड एक्यम, दैट इज द वेलफेयर सोसाइटी फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट। ये सिर्फ कमिटीज नहीं बल्कि 3 ऐसे कमिटमेंट हैं जो यह सुनिश्चित कर कि इस कैंपस में कोई भी छात्र अपनी परिस्थितियों से पीछे नहीं है। अब मैं बात करता हूं इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल करती है जो सामाजिक और आर्थिक कारणों से विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हैं। ईओसी छात्र छात्राओं को सपनों को नई उड़ान देती गाइडेंस, काउंसलिंग, ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड कैरियर सपोर्ट के माध्यम से यह हर छात्र को आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस देती है। लेकिन ईओसी का उद्देश्य केवल सहायता करना नहीं है बल्कि यह हर छात्र को यह मैसेज पहुंचाना है कि योर background does not determine your ability. That is true meaning of equality and that is what EOC stand for. सुगम एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी सोच पर आधारित है। हर इंसान अलग है लेकिन किसी से कम नहीं। जरा उस छात्र की कल्पना कीजिए जिसके पास टैलेंट की कमी नहीं है लेकिन सिर्फ एक रैंप की अनुपस्थिति में वो अपने क्लासरूम तक जाने के लिए उसकी राह बहुत ही मुश्किल हो जाती है। हमारा महाविद्यालय रैंप्स, लिफ्ट्स, एक्सेसिबल वॉशरूम, ह्यूमन असिस्टेंट जैसी सुविधाओं से दिव्यांगजनों के लिए कैंपस को अधिक एक्सेसिबल बनाता है। लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि सुगम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं करता बल्कि वह हमारी सोच बदलता है, क्योंकि असली डिसेबिलिटी किसी शरीर में नहीं होती बल्कि हमारी संवेदनशीलता और उदासीनता में होती है। सुगम एनकरेज अस टू रिप्लेस इन डिफरेंसेस विद अवेयरनेस, काइंडनेस एंड रेस्पेक्ट। मुझे बताते हुए गर्व का अनुभव हो रहा है कि हमारे कॉलेज को मॉडल कॉलेज फॉर अ बैरियर फ्री कैंपस के सम्मान से सम्मानित किया गया है। हमारे कॉलेज को कोर्ट ऑफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन प्रदान है। यह सम्मान इस बात का प्रमाण है कि हमारा कॉलेज सिर्फ इंक्लूजन की बात नहीं करता बल्कि हर स्टूडेंट एक एक्सेसिबल, इंक्लूसिव, बैरियर फ्री कैंपस बनाने के अपने कमिटमेंट को वास्तविकता में भी बदलता है। एक्यम
the Northeast Student Welfare Society. AKM is dedicated to students from the northeast of India. When they come here, they often face a new language, new tradition, and new culture. Sometimes they may feel loneliness in new environment. AKM helps them feel welcome by organizing cultural event, group meeting, celebrations. It reminds every student that this campus is not just a place to study, it is their second home. I would especially like to mention that our college organizes a one-day Northeast Cultural Fest named Aranya every year as a part of annual fest. The event is open to all students and provides an opportunity to experience and celebrate the rich culture, tradition, music, dance of the northeastern states. It promotes cultural exchange, inclusiveness, and strengthens the spirit of unity in diversity. अब सवाल यह नहीं है कि कमेटीज क्या करती है, बल्कि सवाल यह है कि हम स्टूडेंट होने के नाते क्या करेंगे, क्योंकि कोई भी कमेटी तभी सफल होती है जब वह हमारी सोच का हिस्सा बने. अगली बार जब भी कोई स्टूडेंट, नया स्टूडेंट स्पेशली आपको अकेला दिखाई दे तो उसके पास जाकर बैठिए. कोई मदद मांगे तो बिना जज करने से पहले उसकी बात सुनिए, बिकॉज इन just not a policy, it is a habit, and this habit makes us better human being, better student, and helps us to being a better society. आइए हम सब मिलकर आज एक संकल्प ले कि कैंपस में सभी का सम्मान होगा, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टूडेंट्स. हर आवाज सुनी जाएगी, कोई पीछे नहीं छूटेगा, क्योंकि यही ईओसी का संदेश है, यही आप सुगम का उद्देश्य है, और यही एकम की आत्मा है, और यही हमारे कॉलेज की असली पहचान है. जय हिंद, जय भारत. Thank you so much, sir. As we come to the end of today's orientation program, it is time to express our gratitude to everybody who made this possible. For this, I now invite Mr. Manoj Kumar, convener, admission committee, to deliver the vote of thanks. अब हम आज के ओरिएंटेशन प्रोग्राम के अंतिम चरण में हैं, और इसके में ये सारा प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किया है उसके लिए मैं हमारे कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर राकेश कुमार गुप्ता सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इनका लगातार मार्गदर्शन, निर्देशन और सहयोग हमें लगातार मिलता रहता है, जिसके कारण से हम ये प्रोग्राम सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज करने में सफल रहे हैं. साथ साथ आज इनका जो वैल्यूएबल एड्रेस हमें मिला, वो मैं आशा करता हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए आने वाले टाइम में, आने वाले फ्यूचर में एक एक वर्ड उनका मार्गदर्शक के रूप में काम आएगा. इसके साथ साथ मैं हमारी वाइस प्रिंसिपल मैम का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो अपना कीमती समय में टाइम निकाल के हमारे बीच में उपस्थित रहे. इसके साथ साथ हमारी जितनी कमेटीज के कन्वीनर और आज हमारे जो जितने प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने एड्रेस किया है पूरी गैदरिंग को, उनका भी मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा. साथ साथ में हमारे जितने साथी हैं, शिक्षक साथी हैं, वो भी यहाँ उपस्थित रहे, उनका भी दिल से धन्यवाद. और स्पेशल धन्यवाद उन सारे पेरेंट्स का जिन्होंने बहुत पेशेंटली हमारे को सुना, कॉलेज को समझने की कोशिश की, और उनका भी दिल से धन्यवाद. और बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो नए बच्चे आज कॉलेज में एंटर हुए हैं, उन्होंने बहुत पेशेंटली सुना है, समझा है, और आगे भी हम आशा और विश्वास आपसे रखेंगे. इसी प्रकार से हम मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे, आपको भी फायदा होगा, आपके ओवरऑल डेवलपमेंट का के लिए हम काम करेंगे. कॉलेज को हम नई ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे, और इस यूनिवर्सिटी और नेशनल बिल्डिंग में हम अपना रोल लगातार प्ले करते रहेंगे. थैंक यू वेरी मच. Thank you so much, sir. I request all of you to kindly scan the QR code displayed behind me and fill out the feedback form. Your feedback is truly valuable to us.
You can click a picture and fill it out later. If you have any queries regarding your courses, your classes, or your academics, our faculty members are available in the allotted rooms behind me. You can go and clear all your queries that you have and have an interactive session as well. You can click a picture of this as well. We also encourage you to scan the QR code and follow our official social media handles. Stay connected with us for the latest updates on events, activities, and opportunities. Thank you so much. May I request everyone to kindly rise for the national anthem now? Thank you so much, everyone. I request everybody to kindly collect their documents as well from room number 30. Also, please go through the college magazine and the YouTube. We have all the live broadcasts of our events over there.